Right, should be fine. Okay. Now, right, before we begin for today, anyone has any queries, any questions from what all we have covered till now, or anyone had any issues trying to complete the assignments which I've shared? No one? No issues? Sir, I'm personally talking about myself. I have not attempted the assignment yet, but in future I'll ask in case anything happens. But so far, I didn't know, no doubt as such. Yes, sir, same for me. That is good. I do have one question, like if where are all these other people? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 17 people not joining. Not sure what's wrong. I have to discuss this with them. That is good. Fine. No worries. Then let's begin with flow for today. No issue wasting time for you guys, right? If those who have joined, they should be able to proceed, right? So we'll proceed for now. Anytime you see any issues, any doubts, you ask immediately, right? सो अभी तक हमने जो कवर किया है जहाँ पे हमने देखा है कि आपका वर्क फ्लो रूल्स था उसमें इवेंट्स देयर वर लिमिटेड एक्शन बट ओके वी कुड बिल्ड समथिंग देन वी केम विद प्रोसेस बिल्डर जहाँ पे और थोड़ा एडिशंस हुआ अ लॉट ऑफ थिंग्स गॉट अपडेटेड एंड देन वी एंडेड अप विद okay now there are some enhancements there but after that the ask came that okay I want something to be pretty much very generic as much generic as possible. Plus, I should have complete freedom to do whatever kind of automation I want. What does that mean? Let's say हमारा अगर प्रोसेस बिल्डर से हम जाते हैं कि हमारा एक अकाउंट कुछ हुआ है and what I want is okay since this account has been updated I want all related opportunities to that account, right? Let's go to any account here, right? I want some kind of automation. Let's go from top down. प्रोसेस बिल्डर में हम क्या कर सकते थे हम कर सकते थे कि चलो ये अपॉर्चुनिटी पे कुछ अपडेट हुआ है देन उस अपॉर्चुनिटी के अकाउंट पे जाके भी हमने फील्ड अपडेट किया राइट दैट इज समथिंग वी कैन डू हाउएवर व्हाट इफ आई वांट टू डू द रिवर्स कि मेरा अकाउंट पे कुछ चेंज हुआ है एंड देन आई वांट उसका रिलेटेड हर एक अपॉर्चुनिटी पे भी कुछ एक चेंज हो नाउ इन दिस केस वी हैव टू रिक्वायरमेंट्स दैट द प्रोसेस बिल्डर कैन नॉट डू व्हिच इज अगर मेरा अकाउंट पे कुछ चेंज हुआ है सो वट एवर फील्ड्स आई वांट टू डू राइट जो भी मेरे को कंडीशन लिखनी है कुछ भी करना है आई कैन यूज ओनली व्हाट आइदर अकाउंट और फील्ड्स रिलेटेड टू अकाउंट right like I can go from account to user to id right or I can just go account dot rating Yeah. I cannot go to opportunities where this account is tagged तो child records में जा नहीं सकता firstly second in that kind of scenario खाली एक अकाउंट पे तो मुझे मॉडिफाई नहीं करना एक अपॉर्चुनिटी पे या एक केस पे मुझे मॉडिफिकेशन नहीं करना राइट सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन मेरे को क्वेरी करने का जरूरत है राइट आई हैव टू गेट ओके लेट्स टेक केसेस राइट तो मेरे को ये दोनों केसेस कहीं से लाने हैं फिर दोनों केसेस पे मॉडिफिकेशन करना है एंड देन आई वांट टू अपडेट बोथ द केसेस सो दिस होल फंक्शनैलिटी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो जो हम कोड से डेफिनेटली कर सकते हैं बट क्या प्रोसेस बिल्डर से कर सकते हैं and they we cannot that is a kind of limitation जहाँ पे ज्यादा complex जब भी आपके पास situation आ जाता है so process builder also fails which is why लोग जाके apex code में करते थे पहले but then Salesforce launched flows now within flows a lot more complex things can happen and it is not just backend का automation हम कर सकते हैं हम UI level automation भी कर सकते हैं okay so that is why there are multiple types of flows जो आपके पास available है and today what we'll do is today's focus will be I'll just explain all the different types of flows जो available है because there are a lot
Okay, and when you have to use which kind of flow, that we will go through. Is it clear, guys? Yes, sir. Great. Fine. So where do you find flows also? Again, in this quick find, process automation within that. All the automations are within that. Workflow was here, process builder was here, and then flow is also here. Right. So we just came to flows. From flows, let's go to new flow. Now, once you click on new flow, or even if you edit an existing flow, it opens a different window, which is the flow builder. This is the whole UI where you can just drag and drop and build the whole flow from scratch. Okay. Now again, in this case, normally we can use a template, but let's go from scratch. If you see here, the first screen, this is where you have to make the most pivotal selection, which is which type of flow you want to create. Okay. Now, what I'll do is, if you see here, there are all the flow types and there is a grouping of recommended flow types. So how does Salesforce identify what to put in recommended? Basically, out of all of these flows, some flows are, they have provided, but they have seen people do not use a lot, right? There are not many use cases where these can be used, but some they have found are almost always used, right? So those are the ones that Salesforce presents as recommend. But in our case, we will go through all the flow types and then we'll go through which one is used where, how it can be used, right? Fine. Hold on, just give me 1 second. Right. So let's go with the recommended ones first. Okay. Out of this, if you see the first one, which is a screen flow, right? What is the screen flow? If you go here, you go to edit, right? Something opened, save, closed, right? So this is kind of on an action. You open something on the screen, right? You let the person make some modifications, you display something, whatever you want to do within that screen, and then you close that. Or maybe you can click on next, add another screen, right? So this kind of a UI guided path is called a screen flow, which you can create. तो आप यहाँ पे ऑटोमेट बना सकते हैं, जहाँ पे 1 2 4 5 स्क्रीन तक आप बना सकते हैं फ्लो मल्टीपल, राइट? जहाँ पे कंडीशन डाल के आप कुछ भी बिल्ड करें, तो all that screen flow is does is you create some kind of automation जो UI पे चलेगा, right? On a button click you can trigger it, जो खुलेगा, उसके बाद data pull होगा, next. It lets you guide the users through a path that you have created. कि आपको चाहिए इस बटन पे क्लिक करो, ये 4 स्टेप करो, क्लोज करो. So you can put all those 4 steps in 4 different screens, combine them in the screen flow, and one by one, that automation can run. Almost जितने भी यहाँ पे flow के आपको types दिख रहे हैं, the two main differences are where they execute, right, and how they start execution. Okay, कि कहाँ से शुरू होता है execution. So for screen flow, normally what that happens, obviously अगर screen से ही आपको trigger करना है, तो in most cases it is say a quick action button जो आपका screen पे रहेगा, उसके click पे आप launch करेंगे, फिर ऐसे screen पे आपको ऐसे UI दिखेगा, right? और in some cases what you can do within your custom, अगर आप component UI पे आपने बनाया है HTML में, right? LWC हो, Aura हो, वहां से आप लोग click करेंगे and वहां से भी launch हो सकता है, right? So that is a screen flow. But it has to be launched from an action on the screen, right? The next type is a record triggered flow, right? Now this record triggered flow is basically the kind of automation जो हम लोग process builder या workflow rule से कर रहे थे, which was what?
जब भी कोई रिकॉर्ड क्रिएट होता है या मॉडिफाई होता है, हम लोग का ऑटोमेशन चल रहा था, राइट? विथ वर्कफ्लो रूल्स एंड प्रोसेस बिल्डर, व्हाट वाज द इनिशिएशन ऑफ दिस? Right, that when a record is modified, created, at that point of time, those automations run. So obviously with flow also आपको support मिलेगा, right? उस type के action के लिए कि जो record modification पे जो automation है ना, वो तो हमको मिलना ही चाहिए. So that is your record triggered flow. It triggers whenever a record is created, updated or deleted. Right? Then the next one is the scheduled triggered flow. What this means is, this you have to set a time and a frequency. That ये flow मैंने बना दिया. Let's say I have built those steps. जैसे हम लोग flow बना रहे थे कि ये field update करना है या record update करना है, right? Same automation we have built into this. But when it will trigger, I'll set it to, okay, every day at 9 p.m. you run once. Okay. So that time and frequency देके आप इसको schedule कर सकते हो कि कब कब चलना चाहिए. उस टाइम पे ये automatically चलता रहेगा. Right, so it is, all of this is automation. It's just how you are launching it. If you see, right, screen flow UI से हो रहा था. Record trigger flow कहाँ से launch हो रहा है? जब भी मैं कोई record modify कर रहा हूँ in any way. Schedule trigger कहाँ से हो रहा है? I am telling them इस time पे और daily इस time पे चलना चाहिए या 2 दिन में एक बार इस time पे चलना चाहिए. Right, so I have to set that. Now, platform event triggered flow is something I'll just show you here first. Right. If you see Salesforce के अंदर there is something called platform event, right? What is a platform event? You just create something like test event, right? Publish behavior is publish immediately. Say, what happened? Oh, test event. Save. If you see here, I have created one platform event. Now within this, what is happening? 4 standard fields are there. Created by, created date, event ID, replay ID. And I can add any number of custom fields also with this. Let's say I want to say message, right? एक string मैंने add कर दिया. So the purpose of this is, suppose I have multiple components here, right? I have multiple components in the screen, and what I want is, in this component, if I modify something, right? If I modify something, then I want the code to recognize that I have modified this specific thing I have modified. Some input I have added. Let's say in this ticker symbol, right? I have added initiate column. Right? Whatever text I have added into this one, there should be some way for communication between components, right? कि यहाँ से मेरा कुछ मैं चेंज करूँ और कहीं और वो recognize हो जाए. तो उसके लिए क्या कह रहा है Salesforce? And this is because if you're not doing, you know, say record modify नहीं कर रहे, just UI पे कुछ change किया है, कुछ update किया है, right? So Salesforce lets you create platform events. What are these events? Think of events like letters. Okay, you think of events like letters or emails, right? Which is, you trigger this from somewhere and you receive this somewhere. Okay, कोड में भी कहीं से इवेंट आप फायर कर सकते हैं एंड कहीं और आप उसको रिसीव कर सकते हैं.
That way what it lets you does is आप डेटा एक जगह से दूसरी जगह पास कर सकते हैं. An example of this would be, let's say I have one component on this account page, right, and I have another component on this case page, right. So how do I make sure कि यहाँ पे मैं कुछ change करूँ तो वो account page पे भी update होना चाहिए. So I want some way कि Sir, यहाँ से हो जाए. Kunal sir, sorry to interrupt you. Could you please tell me what by saying component, what does that actually mean? What do you mean by saying component? आप थोड़ा मेरे को बताएंगे थोड़ा? Right. By change components, see, all of these are components also. These are standard components. Then there are custom components जो हम code से बनाते हैं, right? What I want is, let's say something I'm changing here. Let's take a simple example. I did this case reason, right? Case reason. I changed this to breakdown, right? And I modified this case. Page got closed. Everything else, right? Now I want something completely unrelated. A lead is not related to a case. Okay, a lead is not related to cases anyway. But what I want is, okay, ये case अगर किसी account का हुआ है, right? आप just जाके check करो कि कोई और lead भी उस account का है जो अभी in progress में है. वहां पे भी मुझे ये field update करना है. So in this case, I want some way of knowing कि case में कुछ change हुआ है, and that should get communicated to lead. So that is what a platform event is. Right now we are discussing what a platform event is. So just a very simple definition. Platform event, think of it just like an email. You fire it from somewhere, you send it from somewhere, you receive it somewhere, right? And you use it to send data. In this case, अगर मेरा केस पे अगर मेरा फील्ड अपडेट हुआ है to break down, then I want this flow to trigger which will update the leads. Okay, so in that case, this is the kind of flow that runs in the background whenever it detects a specific platform event. तो अगर मैंने ये टेस्ट इवेंट बनाया है, इस टेस्ट इवेंट के लिए मैं यहाँ पे एक फ्लो बना सकता हूँ कि जब भी ये टेस्ट इवेंट कहीं से भी फायर हो, मेरा ये वाला फ्लो लॉन्च हो जाए. अब टेस्ट इवेंट फायर कहाँ कहाँ से हो सकता है? देयर आर मल्टीपल प्लेसेस. आप यूआई से फायर कर सकते हो, आप कोड से फायर कर सकते हो, आपका इंटीग्रेशन से भी फायर हो सकता है कि लेट से कहीं से इंटीग्रेशन से रिस्पॉन्स आया, मैंने इवेंट फायर कर दिया, तब मेरा ये फ्लो चलेगा. दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट कैन बी डन, राइट. So this kind of flow does not specifically depend on record or time or something. It is like a listener कि जब भी आपके org में ये वाला event fire होगा, तो आप ये वाला flow चला दो, right? Now the next one is a auto launched flow without any trigger. It specifically mentions auto launch flow, no trigger, right? If you see here, where did it go? Record. Yeah, here, right? So record triggered flow. Record triggered flow and auto launch flow is almost same except the triggering condition, right? ये आपका record जब भी update होगा तब हो जाएगा. So that means this is dependent on Salesforce object records. Auto launch flow का क्या है? You can just create it and keep it as per your need. You can call it from wherever you want. आप इसको प्रोसेस बिल्डर से भी कॉल कर सकते हो, क्विक एक्शन से भी कॉल कर सकते हो, एपेक्स कोड से कॉल कर सकते हो, LWC से कॉल कर सकते हो, राइट. सो दिस डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक ट्रिगर कि खुद का कोई डिफॉल्ट ट्रिगर नहीं है कि यहीं से चलेगा, राइट. आपने फ्लो बना दिया, आपको जहां से लॉन्च करना है आप लॉन्च कर दो. ओके, so this is the one you create when you are not sure from where it will be launched, or you already know it will be launched from multiple types.
अगर आपका कोई ऑटोमेशन है जो आपको पता है कि मेरे को एक इंटीग्रेशन का रिस्पॉन्स आने पे भी चलना चाहिए और मेरा केस का कोई फील्ड अपडेट होने पे भी चलना चाहिए, सो देन इफ यू मेक दैट फ्लो एज अ रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो, तो केस के अपडेट पे तो चल जाएगा बट इंटीग्रेशन के रिस्पॉन्स पे नहीं चलेगा, राइट? यस और नो? Yes. राइट, बिकॉज जो द ओनली डिफरेंस, द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस टाइप्स इज कि वो चलेगा कहाँ से, राइट? तो इफ यू वांट इट टू बी लाइक नॉट लिमिटेड, कि जब मेरा जहाँ रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग मैं चला लूंगा कहीं से, so you will make it as a auto launch flow that you don't initially define a criteria, you don't by default give it a trigger based on your need, आपको जहाँ जरूरत है वो आप यूज कर लेंगे. Out of all of these here, I would say auto launch flow no trigger, record triggered flow and screen flow are the ones which are used most. Okay, these are the ones which almost every org will have at least these flows. Okay, now after this let's go to something else. This one, okay, before I cover record triggered, let's go to this one. So first we have to understand what is the term orchestration means here, right? Orchestration का मतलब यहाँ पे है, think of it this way, what is a orchestra? An orchestra is a guided music performance, right? Where everyone has their own role, everyone has their own step at what point who will play what, right? Similarly, orchestration, the here it means the same thing. You will set a guided path for multiple users, कि मतलब पहले इसके पास कुछ ये कराओ, फिर उसके पास कोई एक्शन होगा, then after him there will be another action, right? So that is called a orchestration. Hold on. So that is also something that you can do in Salesforce. कि अगर ये केस है, think of it this way. Let's take this opportunity for example, right? अब ये opportunity जो है मेरा, this is an opportunity of some specific amount, right? Let's say this is of 15,000, right? Amount this opportunity is. Now what if I want that if it is, say, instead of 15,000 it is 15 lakhs, right? Then I want to have criteria in place ki, okay, if there is any opportunity above 15 lakh, first assign it for review to some user, right? Then once that user adds a related record, then assign it to another user. Once they go through it, then the opportunity should be assigned to a final approver who is the only one who can mark this as closed, right? So orchestration is that process you want to define. Now within orchestration, the scenario I just shared, that is a approval orchestration, जहाँ पे आप कुछ अप्रूवल आपको चाहिए, should you proceed this, right? Do you want to submit this? So in that case यूजर लेवल पे आप अप्रूवल लेते हो, उसके बाद ही वो एक्शन अपडेट होता है. So that is called approval orchestration. Just normal, if you want to create a path, then that is your just normal orchestration. If you want an example of this, right? For example, I would suggest what should be for this one, for orchestration flow. Approval orchestration flow I can see for like leads and opportunities and orders, right? But for normal orchestration flow, the one I can think of is lead to order pipeline, or in our case, what should be there? Fine. Yeah, in our case, I think what was the custom object we had created? We created a custom object, right? Employee.
Yes, employee, right? So for employee, let's say we want, जब भी आपका कोई employee onboard होता है, right? So what you want is कि उसका प्री ऑनबोर्डिंग या ऑनबोर्डिंग एक्टिविटीज का एक पूरा प्रोसेस होता है कि सबसे पहले लेट्स से आपका एचआर मैनेजर जाता है, उसके बाद दे परफॉर्म सम फॉर्मेलिटीज, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सब अपलोड होगा, ये सब होगा खत्म। उसके बाद लेट्स से आपका ऑनबोर्डिंग का ईमेल आईडी वगैरह सब एक्टिवेट होगा। ऑल दोस थिंग्स यू कैन डू हियर। लेट मी जस्ट डू वन थिंग, आई विल शो यू एन एग्जांपल, राइट? सो इफ यू सी हियर, यहाँ पे आप स्टेजेस आप डाल सकते हो, राइट? लेट्स से दिस इज स्टेज 1। Stage 1 is HR onboarding, right? Now within HR onboarding, what I want to do, I can add any kind of actions here, right? Let's think I add another step, right? And I add another step, right? Step 1, step 2, step 3. Only after all these steps are completed, it will then go to this one, stage 2, which is let's say tech onboarding, राइट? जहाँ पे आपका लैपटॉप वगैरह होगा, ये सब असाइन होता है, राइट? दिस इज हाउ जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो ऑनबोर्ड होता है, राइट? पहले एचआर सब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद आपका लैपटॉप वगैरह असाइन होगा, उसके बाद जाके आपका डिपार्टमेंटल ऑनबोर्डिंग होगा, राइट? विच वुड बी व्हाट, जहाँ पे आपका टीम के साथ असाइनमेंट होगा, प्रोजेक्ट असाइन होगा, ऑल दोस थिंग्स हैपन। सो स्टेप वाइज अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं पूरा पाथ बना के, राइट? So this is what is called orchestration. Now all the different types of flows that we saw here, all the orchestrations basically work like this. We will create individual flows for this also, no worries. Why did it go to class? Right. So at least orchestration का मतलब आपको समझ आया आप सबको? Anyone has any doubts, any questions? No, sir. So does this orchestration things works on specific object? हमें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं, जैसे आपने ऑनबोर्डिंग का एग्जांपल दिया था, तो वो उसमें स्टेजेस का आप बता रहे थे कि मल्टीपल स्टेजेस होंगे, Again, तो एक yeah, that's why I told you, right? Auto launched and record triggered, you have to remember. See, you have auto launched orchestration, you have record triggered orchestration, right? Auto launched approval orchestration, record triggered approval orchestration. So it depends. और record triggered आपने बनाया तो again you will add a condition. जैसे employee create होने पे मेरे को बनाना था, right? So that will be my record triggered orchestration, right? और अगर मैं चाहता हूँ नहीं कहीं कोड से आए तो then it would be what? It would be then auto launch, right? राइट। So these are all variations. You have to think. Core principle is same. It's the variation is only of what kind of scenario आपको use करना है और कहाँ से launch होगा. That is the main decision you have to make. Right? अगर आप चाहते हो record पे हो तो obviously you will choose the record triggered वाला version. Else आप choose करोगे auto launch वाला version. Right? कि नहीं मेरे को code से भी चलाना है. Then okay. राइट। Right.
Now, all these I would say are the more complex or the more commonly used ones. There are a few other ones which are like this, user provisioning flow, जो आपका user बनाने का एक flow, default very quickly you can do. Then there is a contact provisioning flow somewhere, contact provisioning or contact request flow, right? ये भी एक फॉर्म टाइप का खोलता है जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट का डिटेल्स डाल के वेरी क्विकली कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड सब बना सकते हो. Hmm. Then object linking flow, right? One object to another object you want to link in a, like a point and click way. But these I would say are not used that much. There would be very less, scenarios सर where it जैसे is यहाँ पे used. कॉन्टैक्ट क्रिएशन वाला फ्लो है Contact और request flow. Yes. और ऐसे ही एक और था नीचे User provisioning. यूजर प्रोविजन. तो सर ये कैन बी रिलेटेड टू दोज बटन्स, ये एक्शन बटन्स जो कि हम अकाउंट के साइड में होते हैं न्यू कॉन्टैक्ट करके. See, with all this flow, right? ये जो user provisioning flow है, तो यहाँ पे भी आप क्या डाल सकते हो? You can add a screen like this, right? In the screen you can add an input कि आप email डालो, right? आप कोई चेकबॉक्स है, please add your address, right? Select date. If you see here, so you can create this version here. राइट The सर, मैं purpose वो is, कह रहा हूँ कि जैसे अकाउंट के साइड में जैसे आता है कि न्यू कॉन्टैक्ट, ऐसे बटन होते हैं, हम कोई भी अकाउंट रिकॉर्ड खोलते हाँ हैं हाँ, तो. yes 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 yes, the purpose of these is that only. तो आप ऐसा बना के कहीं पे भी आप embed कर सको ताकि वहां से using this flow you can very quickly create contact. हमें इधर उधर ना जाना पड़े ऑब्जेक्ट्स में, वहीं से क्लिक हाँ, कर. right, राइट. yes, that is the purpose. Right. Now, out of these ones, there are few specific flows types. I would, those are the ones only which I covered to in too much detail, but I would want you guys also to make sure you know everything about those, which are screen flow, record triggered flow, scheduled flow, platform event, auto launch flow. These five you should, I would say, 95% cases you should be very comfortable with these five flows. ये जो पांच, even orchestration, I don't see a lot of people using. It can be very useful if used, with planning, but I don't see a lot of people using it. Many times people end up with like having two, three separate auto launch flow instead of one record triggered orchestration. I have seen this happen, right? But in not all cases orchestration is applicable. But these five you will mostly always see because think of this schedule triggered, auto launch, and record triggered, right? एनी org जहाँ पे ऑलरेडी वर्कफ्लो रूल्स और प्रोसेस बिल्डर था, जब उन्होंने वो सब माइग्रेट किया, राइट, तो whenever they migrated that, anyway to migrate to flows they had to convert it into either one of these three, right? क्योंकि प्रोसेस बिल्डर जहाँ पे कोड से लॉन्च हो रहा था उसकी जगह उन्होंने ऑटो लॉन्च फ्लो बनाया जो कोड से लॉन्च करेंगे. वर्कफ्लो रूल के अंदर रिकॉर्ड ट्रिगर था, शेड्यूल ट्रिगर था, तो सीधे ब्रोक इट डाउन, राइट? जो हमारे शेड्यूल्ड वाले इवेंट होते थे वो यहाँ पे डाल दिए, जो नॉर्मल वाले थे यहाँ पे डाल दिए. सो दीज थ्री तो आई वुड से डेफिनेटली इज देयर. Screen flow, a lot of people used because it is very easy to create. Just that screen I showed you, right? कि आप just जाओ screen के अंदर input फटाफट करके डालो, record बना दो. That is all very simple. So screen flow is also used a lot. Platform event, I would say it is not used that a lot, but more like in an interview, you are expected to know the answer of what is a platform event triggered flow. It's more like a question to measure your technical skills rather than have you actually used it, right? So at least ये 5 flows तो आप सबको पता होने चाहिए. Am I clear? यस सर. Anyone, any questions, any queries?
सर वन मोर थिंग, ये प्लेटफॉर्म इवेंट जो हमने बनाया था उसमें एप्लीकेशन नेम मैंने रेंडमली देखा भी, तो वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर ई था। हाँ, वो टाइप है ना, जैसे आपका ऑब्जेक्ट और फील्ड के लिए सी है, इवेंट के लिए ई होता है, मेटाडेटा के लिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर एमडीटी होता है. Okay, it's a way for Salesforce to, using API name, it can identify कि ढूंढना कहाँ पे है, देख क्या रहे हैं, right? राइट। Right. So now let's do one thing. Let's create a screen flow. Okay. हम एक screen flow बनाएंगे, and within the screen flow or within most of these flows, right, you will see what are the elements you can add, right? You can add a type of screen, you can add a type of action, or even call another flow, right? Or individually, what you can do is assignment, decision, loop, transform, collection, sort, collection, filter, create, update, get, delete, rollback. So all kinds of database operations, all kinds of logical operations, and screen and action are available. So let's go to screen first. This is how the screen will look. Let's add a label. I want to create contact. Right? ये मैं एक flow बनाना चाहता हूँ जो मेरा एक contact create करे. Now within this, if you see, I can have a header. I can also remove a footer, or let's add footer. Right. Next, finish. And in this one, I want to hide previous and to hide pass. Only next will be there. ये रहा मेरा एक bare screen. अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है? I want to add some inputs. Enter name, right? Enter email, and contact के लिए और क्या mandatory? I don't think name and email is the only one which is mandatory. Oh, account is mandatory, right? So it would be your lookup, right? So name, this will be name, right? Lookup, I'll configure it to be, let's say, account lookup, and then value. Okay, let's remove lookup for now. Right, just add, so I add a name, email. Done. Just a simple save. Create contact. Save. This is not a working flow. I've just added a flow, and I'll just save this, and I have activated this. Right. Now what I can do is, let's go to my account object. Let's go to button links and quick actions and create a new action, which would be what I'll call a flow. Now if you see here, all the flows I can see, I selected this one, and I'll set the label to
create contact record. Save. So as of now, what I've done is I've just created a dummy flow, right? Just a dummy screen flow. No logic there as such, but just a flow. Then I have linked the dummy flow to a quick action. Now if I go to the page layout and what was the one we created? Create contact record, right? And let's put it at first. Let's hope this updates. Yeah. If you see, this quick action is visible here. Create contact record. Name, first name, last name, email is there. Finish. Now, if you think of it, how easy it is to create a screen element if I use a screen flow. अगर मेरे को खाली यूजर से इनपुट्स ही लेने हैं या कुछ थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के कुछ दिखाना है आउटपुट, राइट? So if I just use a screen flow, is that not easier than trying to do everything with code? Yes, sir. Right? Yeah, because see, for this is where these kind of things is the reason that the Salesforce administrator role is still a very important role. Right? Even without using code, you can build a lot of things in Salesforce. Right? In most cases, people who have simpler projects or simpler, implementation requirements, they don't even need to write a lot of code because Salesforce provides you all of these tools. Now just think of this. यहाँ पे तो खाली हमने एक स्क्रीन ऐड किया, राइट? यही अगर मैं उस फ्लो में वापस जाता हूँ, वहां पे जाके लेट्स से आई ऐड सम लॉजिक वेयर आई get all the related records, right? Let's say get all opportunities. So what I'm doing here is I am getting all the contacts where account ID is equals to from the screen flow, whatever ID I have hit, right? So I can query the records also. Now I can only query one record. I can query all the records. I can also query records which, at this condition, if I want, I can sort them based on some value, right? So using this get, very simply, I can query record, right? If I want to update some records, I can update those records. I can delete those records. I can create a new record, right? All the logical operations I have, assignment, decision. This decision is like your if condition. Okay, this loop is just like, you loop through a list and a collection you can loop through. Subflow, you can call another flow. Action, if you go to, action is a completely different case where you can define custom actions on all the objects, right? And you can trigger that also directly from here. If I go here to the account object, right?
Where is that? Sorry, which tab did I come to? Right, sorry, here. So here, if you see, there are all of these actions which are already available here, right? जो हमने बनाए हैं, these can be quick actions, this can be custom action जो आपने बनाया है, all those things you can do here, और you can also do the standard out of the box जो related task वाले जो थे, जैसे new task बनाने का, post to chatter का, new opportunity, new lead. For a lot of these events you have all these things defined which can be called here, right? So that way ये हमारे पास सारे ये actions है जो we can use. Even not just that, I can also do a call out, right? Now for an external call out, Salesforce में क्या होता है, there is something called external service which is nothing but your API service, and this name credential is nothing but the username password kind of जो आपको API चलाने के लिए चाहिए. तो आप API integration भी flow से आप trigger कर सकते हो. So the amount of scope that can be done within this is a lot. Okay, why is this not minimizing? Right. So within a flow, if you see, a lot of these things you can do. And one other thing, which is, अगर आपका वर्कफ्लो रूल में कुछ फेल हो जाता है तो क्या होगा? लेट्स से वर्कफ्लो रूल आपका है जो चला है, राइट? हमने ये किया है, अपॉर्चुनिटी क्लोज का वर्कफ्लो रूल हमने बनाया था, राइट? व्हाट इट डिड वाज, ये फील्ड अपडेट करता था डिलीवरी इंस्टॉलेशन स्टेटस. लेट्स से मेरा एक वैलिडेशन रूल है, राइट, जो ये स्टेटस अपडेट नहीं करने देगा. सो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इन दैट केस? तो वो फेल हो जाएगा. एंड देन कुड बी रोल बैक कर देगा जो प्रीवियस उसकी वैल्यूज होंगी. नहीं, रोल बैक तो वो करेगा, राइट? एरर बेसिकली रोल बैक भी नहीं होगा, वो बेसिकली जस्ट एक ही ऑब्जेक्ट अपडेट होना था, वो अपडेट नहीं हुआ, राइट? इट इज क्लोज, राइट? नाउ व्हाट विल हैपन इज, यूजर के लिए एक्सपीरियंस की तरफ से आप सोचिए कि अपडेट होने गया, वर्कफ्लो फेल हो गया, यहाँ पे ऐसे बड़ा बड़ा करके here you will see a error message कि this workflow failed, this thing happened, all this thing happened, right? So this is what, that you have not done proper error handling. Normally आपका जब कोई आप वेबसाइट यूज करते हैं, कोई आप पोर्टल यूज करते हैं, अचानक से आपको एक बड़ा सा एरर मैसेज दिख जाता है कि ये पेज नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, राइट? इज दैट गुड यूजर एक्सपीरियंस? नो. No, right? So which is why in most projects, in most technologies, there are multiple ways of doing error और exception handling, right? कि कुछ एरर आ जाए तो हम एरर को चेक करें, फिर एक कुछ कस्टम एक मैसेज बना के रखे कि अच्छा यूजर को ये मैसेज दिखाओ, उसको ये मत बताओ इस क्लास का ये मेथड में ये हो गया, यू शो अ सिंपल मैसेज दैट something went wrong, please reach out to customer support, right? Something went out, or send us this details on email, right? So this kind of approach where you make sure that you handle the error instead of showing everything to the end user, this is something which is very required and desired in modern systems ताकि customer का user experience अच्छा हो. Within flows you can also do this whole thing with a sorry, where did it go? I wanted to this heading is, hold on. No, I added a connector.
facing issues with the cursor. Right. That's what. Fine. So within this, what happens is it also lets you add something called a fault path. Right? What is this fault path? Fault path means ये मैंने क्वेरी किया, लेट से मेरा क्वेरी करने के बाद कोई रिजल्ट ही नहीं आया, कुछ गड़बड़ हो गया, राइट? देन व्हाट आई विल डू इज आई विल maybe send them an email. I want to send them an email कि एक काम करो, अगर गड़बड़ हो जाता है तो you send an email, right? Send apology email. Okay? अगर यहाँ पे स्क्रीन के बाद यहाँ पे आके कुछ गड़बड़ हो जाता है तो लेट्स डू वन थिंग, आई वांट टू शो देम अनदर स्क्रीन जहाँ पे आई विल जस्ट शो देम अ टेक्स्ट. Sorry, not this display text, that something went wrong, please contact system administrator with so and so code, right? Error screen, I'll show an error screen. What is error, right? Oh, sorry. Done. So विद इन फ्लो आप अपना पूरा ऑटोमेशन तो बिल्ड कर सकते हो, लेकिन ऑटोमेशन फेल होने पे किस तरह से एरर हैंडल होना चाहिए वो भी आप बिल्ड कर सकते हो. एंड इट इज नॉट जस्ट सिंपल हैंडलिंग कि अच्छा एरर हो गया तो कहीं पे वो कर दिया, राइट? आप एरर आने पे भी नॉर्मल फ्लो की तरह बाकी का दूसरा ऑल्टरनेटिव पाथ बना सकते हो कि चलो यहाँ एरर आ गया तो यहाँ वाले स्टेप्स करो, यहाँ एरर आया तो यहाँ वाले स्टेप्स करो, राइट? इन केस आपका एरर आया तो क्या एरर आया आपको सेव करना है, राइट? व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ रिकॉर्ड. आपको एक लॉग टाइप का रिकॉर्ड बना के रखो ऑब्जेक्ट, उसमें क्रिएट कर दो रिकॉर्ड कि अच्छा इस टाइम पे इस ऑब्जेक्ट पे ये एरर आया था. दैट आल्सो यू कैन डू. So the amount of options, if you see, just with this just template I'm showing you guys, right? This is not an actual flow because there is no logic here, but just template wise I'm trying to show what all can be done, right? The kinds of things you can do with the flow are, I would say, numerous, right? It's like every type of flow has hundreds of thousands of millions of possibilities. और ये सब आप ऑटोमेशन पॉइंट एंड क्लिक से कर रहे हो, देयर इज नो कोडिंग इन्वॉल्व. आप एक फ्लो के अंदर 10 टाइप के रिकॉर्ड पुल करके अपडेट कर सकते हो एक एक करके, राइट? एक ही ऑटोमेशन में आपका प्रोसेस बिल्डर कैसे चलता था, आपका वर्क फ्लो रूल कैसे चलता था, इट रन्स ऑन अ रिकॉर्ड, व्हिच मींस एक रिकॉर्ड हुआ, उस रिकॉर्ड पे गए, उस रिकॉर्ड को अपडेट किया, क्लोज. यहाँ पे आप क्वेरी करके एक ही ऑटोमेशन में 10,000 20,000 रिकॉर्ड्स आप मॉडिफाई कर सकते हो एट वन टाइम, राइट? So these are basically the types of flows, and I would say the major benefits of flows over process builder and workflow rules. Are this clear? जी सर. सर एक बार अपना फर्स्ट स्क्रीन जो आपने बनाया था वो एक बार ओपन करेंगे प्लीज? यहाँ पे इसमें तो जी कुछ सर. है नहीं वैसे, बट या नहीं सर, वो फ्लो में ये आपने
यहाँ पे ये हाँ जी, फ्लो बिल्डर में। राइट। सर यहाँ पे आपने नेम, जैसे अब अपना होवर ऊपर कीजिए, हाँ, जैसे ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक ही उसके अंदर आ रहे हैं नेम में। हम्म। ये आपने कैसे किया था? नहीं, ये एक रेडीमेड सेक्शन है यहाँ पे। दिस इज अ रेडीमेड ओके। सेक्शन, एज अ कंपोनेंट ही मिल रहा है, राइट। इफ यू सी एज अ कंपोनेंट मिल रहा है, दिस सेम थिंग आई कैन क्रिएट इन अनदर वे वेयर I'll instead put, you know, two names, right? This I'll make first name, and this I'll make last name. Right, ऐसे मैंने बनाया. Or what I can do is I can also have a section, right? Within this section I can put this, right? So if you see here, so you can create individually also, but कुछ चीजें हैं जो उसने खुद से बना के दी है, right? I can add a button. right? कोई बटन डाल दिया, बटन के क्लिक पे कुछ करना है, सर जैसे right? हमारे So पास the जैसे हमारे पास एक वो है, सिनेरियो है जिसके अंदर हमें तीन रेडियो बटन हमारे डिस्प्ले हो, बट उनका एपीआई नेम वैल्यूज के नाम पे, मतलब वैल्यूज के बेसिस पे, नॉट ऑन द लेबल बेसिस। हाउ डू वी डू दैट? तीन मेरे पास रेडियो बटन है, एंड देन व्हाट आई वांट. सर इनका एपीआई नेम सेम ही हो, बस वैल्यू के बेसिस पे ये डिफरेंशिएट हो। नहीं, जिस एपीआई नेम तो आपका डिफरेंट होगा, लेबल यू कैन कीप एज सेम, राइट. क्या हम एक रेडियो बटन के अंदर आप डिफरेंट रेडियो बटन बना सकते हैं, एक डिफरेंट रेडियो डिफरेंट बटन वैल्यूज के के? अंदर हाँ हाँ, ऐसे। आपको चॉइसेस ऐड करने होंगे, यू हैव टू ऐड चॉइसेस. इफ यू ऐड अ सिंगल चॉइस, सो दैट मींस इट्स लाइक वन, राइट. यू हैव टू सेलेक्ट कलेक्शन ऑफ चॉइस, मींस आप ऑप्शंस ऐड करोगे उसके अंदर, राइट. क्या क्या ऑप्शंस है उसके अंदर, इट विल बी लाइक 1 2 3 4, ऐसे चार आ जाएंगे, राइट। राइट. So that is what within this, but if you create different radio buttons by itself, okay, think of it this way. When you say I have created a radio button, right? This is not the radio button. This whole component is the radio button. Within this, you can have two, three, four, five, six choices, right? And at one point of time, anyone you can select, right? राइट सर, जैसे इसमें अभी आप क्रिएट करेंगे, जैसे फर्स्ट रेडियो बटन, क्रिएट कॉन्टैक्ट, क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अपॉर्चुनिटी, ऐसे। No, that will just be button. That won't be a radio button. रेडियो बटन आप इसको बोलते हैं, ये जो ऐसे सिलेक्टेबल जो होता है ना आपका चेक बॉक्स, दैट इज कॉल्ड अ रेडियो बटन. ओके. See, this is what a radio button works like. Like this. Okay. This is a radio button. यहाँ पे ऐसे मल्टीपल रहते हैं. द डिफरेंस बिटवीन अ चेक बॉक्स एंड दिस इज, अगर ये चेक बॉक्स होता तो मैं दोनों सिलेक्ट कर सकता था, बट रेडियो बटन मींस आउट ऑफ मल्टीपल यू कैन ओनली सिलेक्ट वन. ये राइट सर, जैसे यहाँ पे रेडियो ग्रुप लिखा हुआ है, उसके हाँ अंदर हमारी चॉइसेस है सेल्स एंड सॉरी. फोर्स, दो चॉइसेस हाँ हैं। ये हाँ वहाँ फ्लो पे ये सेल्स और फोर्स मुझे थोड़ा बताएंगे कैसे बनाना है? हाँ, ये आपको यहाँ पे चॉइस ऐड करना पड़ेगा ना. ये आप यू क्रिएट अ चॉइस. और सर ये बैकएंड पे इसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा इसकी वैल्यू को? हाँ, तो इसका जो भी आपने एपीआई नेम डाला है, राइट,
Let's say radio button 1, राइट? ये जब आपने बनाया है, तो ये जब 22 इस स्क्रीन के बाद जब भी आप कहीं पे इसका, ओके, आई थिंक आई हैव टू ऐड अ लॉट ऑफ फाइल्स, ओके, दिस फॉर नाउ, delete, delete. So every button, this is a radio button group. Okay, within that you can create all this. अब ये जो मैंने इसका जो API नेम बनाया है, right, which is radio button 1. Now if here I see and I set a value, default value as, if you see here, okay, these screens have error, right? Okay, because of all these elements, it's failing. Right? That's working. Right, sir. Right, sir. Okay. Yes, So sir. input here is the whole value. Now within this radio button, within this, now you have to add choice, as many choices as you want to add. Okay. Right, sir. Okay. Now see, as soon as I made it as, it converted to checkbox, because with radio button you cannot have multiple options selected, but again it got changed, right? Right. So this is how within this, so this is just like a brief of what all we can do, right? Now this is not a functional flow. Flow बना के कुछ काम भी तो होना चाहिए, तो हमको काम तो कुछ करना पड़ेगा इस flow पे, right? So that will have to cover. So this is a screen flow. So we'll create maybe a multi-screen flow जहाँ पे हम step by step कुछ input लेते हैं, कुछ display करते हैं, कुछ output करते हैं, right? Okay. Right. Is this clear? Yes. Good. So for today, I would suggest nothing too complex. Just go through some documentation. I'll share you some documentation also for these types of flow. You should be very clear with what the definition of each type of flow is and where what are the use cases for it. Because in interview, when people are asking you, they will just mention the specific name. Okay, what is a platform event flow? Right.
They will just directly ask you what is an auto launch flow without any trigger, right? So you should have a proper definition of what is happening, where it is, right? How to write it, and what does that imply? Okay, then tomorrow what we'll do is we'll start work. This is just a dummy one, but we'll work on this whole screen flow where we will be taking user input and create contact records for a specific account. Okay, and we'll create a screen flow also. We'll create record triggered flow also, right? जो changes हमने workflow rules और process builder में बनाए थे, we will migrate those into flows because that is how it is should be done, right? Everyone okay? Any Sir, I queries? Any wanted to questions? have some doubt. I would like to have it at the end of the class, after everybody is done with their doubts or something. Okay. Okay, I don't see anyone raising hand. You can proceed. Sir, can I share my screen? Actually, I had Yes. done some research and I was trying to make a flow. Okay. Just give me a second, sir. I'm showing it. Sir, is it visible? Yes. Sir, like this, I was asking. In this ना I had made these things. तो मैं आपसे पूछ रहा था Okay. कि इसका वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसा सिनेरियो सोचा था कि जैसे मेरे को तीन डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस करने हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हम्म, फंक्शनैलिटीज ऐड करनी है डिपेंडिंग अपॉन हम्म, द डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा रेडियो बटन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, हाँ, राइट? वैसे तो मैंने जब बनाया आपने चॉइस बट बनाया था तो हर चॉइस के लिए आपने एक लेबल और वैल्यू दिया था कि नहीं? ये सर, बट अभी वहां पे आपने जैसे यहाँ पे दिया था, बट यहाँ पे ना एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रहा था आपके स्क्रीन में, तो वो मुझको समझा नहीं। मेरे इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रहा है। राइट No, सर, this is आपका a ड्रॉप text. डाउन। Okay, no, नहीं that happened because ये data type मैंने वो pick list कर रखा था इसलिए. For text you just provide text value. Okay, you just provide text value. तो हर एक राइट सर, चॉइस का see think of it this way. जब आप किसी भी ड्रॉप डाउन में कुछ एक चूज कर रहे हैं तो by राइट itself हर every click is just one text, right? Think of राइट like gender, right? Male, female, unspecified, right? So male is just a word, was to select one, right? Think of a job category, so private, service, government employee, homemaker, right? All of those options आपको दिख रहे हैं, but any one point of time it is just one set of text. तो यहाँ पे value will be just text only. Okay? राइट, बट सर आपने टेक्स्ट ही सिलेक्ट कर रखा है उसमें। नहीं, वो तो बाद में पिक लिस्ट हो गया इसलिए तो मुझे हटाना पड़ा. If you ओके see here, if right now I have it as text, right? सर, स्क्रीन नहीं And विजिबल आपका। right. Can you see? यस सर, आई कैन Right. सी। So यस, here, either I can write here a text, right? Text value. और this is a lookup जहां से भी मुझे किसी एक टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा. Okay? It is not a pick list. It is not a drop down also. Either I write here text या फिर अगर मैं कहीं और से वैल्यू लेना चाहता हूँ, right? So that also I can take. But it has to be a टेक्स्ट text value. वैल्यू। Okay, it is not a pick list. ओके सर, थैंक यू। क्योंकि ड्रॉप डाउन में तो वो टेक्स्ट ही आएगा, राइट? तो चॉइस आपका वो टेक्स्ट ही रहेगा. ठीक है सर। Okay, great then, guys. Just go through some of this documentation. I'll also share you the links in the WhatsApp group for what to study, where to refer. And then once you all have gone through, tomorrow we can probably connect and we'll go through creating this whole flow properly.
right? How it should be as per recommendation. What are the things we should be considering? What are the steps we should follow? We will create a screen flow, then we'll also create an auto launch or a record trigger flow. Okay, great. I think that's all then, guys. Thank you.